Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahabat yang melakukan zina saja, maka seorang sahabat datang, ya Rasulullah, bersihkan saya. Kenapa setelah bersih? Akhirnya ditegakkan had, dirajam karena dia sudah menikah dan berzina. Maka ketika dirajam kemudian darahnya muncrat dan mengenai salah satu sahabat yang melemparkan merajamnya, maka sahabat tadi mencela dia, kena darahnya. Dan dia mencaci maki sahabat yang dirajam tadi. Maka Rasulullah bersabda, jangan katakan seperti itu. Dia telah bertaubat. Seandainya taubatnya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, maka akan menjadi. Kepada orang yang berzina, Nabi SAW bersabda seperti itu. Tapi ini kenapa sampai 50 hari dibuat nangis oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka bermalas-malasan, terlambat satu kali dalam hidup mereka tidak keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini pelajaran bagi kita hati yang mulia, betapa tingginya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amal keluar kita hari ini dan memang seharusnya mabuk-mabukan, minum arak itu adalah perbuatan jahat, perbuatan buruk, dosa. Begitu juga mencuri, berzina itu adalah perbuatan dosa dia. Tapi hati yang dirahmati Allah SWT, kita jarang yang menganggap, merasa, memahami bahwa bermalas-malasan dari keluar jalan Allah SWT adalah sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang yang memahami perkara itu, sehingga banyak di antara kita yang bermalas-malasan dari keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan perkara-perkara yang lain, padahal itu sama dengan menarik murka Allah. Sahabat yang sepanjang hidupnya mereka berjuang di jalan Allah, kali saja mereka terlambat, tertinggal, maka Allah Subhanahu wa taala membuat mereka menangis selama 5 bulan. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. ये मजलिस बहुत सी नियतों ने किए हुए हैं। पहली बात तो ये एक जमात जो निजामुद्दीन और इंडोनेशिया के अहबाब को मिलकर तकरीबन 21 से 25 आदमी पूरे मुल्क का सफर किया। तकरीबन 6 इज्तिमा आखिरी मुल्क का मशवरा किया। सफर की आखिरी बड़ी अहमियत है। दूसरा ये कि आपकी शुक्रगुजारी की मस्जिद है, बहुत अहमियत है, बड़ी अहमियत है। सभी चाहते हैं हर बात तवज्जो के साथ बात सुने, आंखों को खोल ले, मोहब्बत की निगाहों को हवा से देखते रहे, ना पैरों को पकड़े, ना आंखों को जकड़े, देख लग जाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजल से खैर की बातें जो अल्लाह की रहमत है वो इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah SWT, sampaikan bahwa ini majlis yang sangat penting. Sebab ini majlis terakhir dari rangkaian perjalanan kami kemarin ke Bugis dan juga Indonesia. Kami 25 orang telah mengadakan safar di seluruh Indonesia dengan kawasan 13 istimewa dan ditutup dengan musyawarah seluruh Indonesia, musyawarah nasional
ini tahu kami akan kembali yang nanti mengikuti. Yang kedua juga ini malam Sabtu dari teman-teman Jakarta. Nah, ini adalah satu majelis yang mulia. Untuk itu kami harap semua supaya duduk. Jangan ada yang foto-foto video Pak, ini masjid. Artinya dirahmati Allah manakala disampaikan, itu kami harap untuk semuanya dulu dengan tawadhu. Jangan ada yang main-main dengan jempol kakinya atau dengan tangannya, tidak bersandar dengan tawadhu, angkat kepalanya. Insya Allah semoga ini kami akan sampaikan ucapan pembicaraan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka apa? Buka mata. Buka apa? आपसे आत्मा में सो रहा हो उसको देखा Jadi kanan bila ada yang ngantuk dibangunkan. इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अरे मोहतरम भाइयों अल्लाह पाक ने आपके मुल्क को कबूल किया है इस मुल्क के बाशिंदों में बहुत सी खुशियात है वो खुशियात ऐसी है जो अल्लाह को पसंद है जिंदगियों में सादगी जिंदगियों में छोटापन हर आदमी में आजिज़ी इतनी ज्यादा है लेकिन तो हमें भी ऐसा लगता है कि इसमें क्या है अरे छोटा होता हुआ है अरे झुका हुआ है अरे चुप पे मिल रहा है मोहब्बतें ऐसी है कि हाथ को इधर से भी इधर से भी जुड़ते हैं मोहब्बत की पहचान है पूरे चेहरे को हर जगह से dibangunin. Sudah sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sifat-sifat yang bersifat orang dalam akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerendahan, tawadhu, merasa dirinya miskin, mahabbah, kasih sayang pada banyak kali ada pada masyarakat sendiri. Dan kami lihat di negara manapun mahabbah yang ada pada diri kalian kepada kami, kepada orang-orang tua dan masyarakat. Dimana kalau ketemu sahabat tidak hanya salam, tapi dicium tangan. Cium tangan juga bukan hanya punggungnya, telapak tangannya dicium, punggungnya dicium. Karena dia ingin bahwa siapa dari kalian itu tentang rasa cintanya kalian kepada kami, pada masing-masing diturutin. Maka itu diantara sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai dan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima diri. आपने इस मेहनत को मकसद बना के अगर किया, ये मेहनत मेरी जिंदगी का मकसद है, यकीन जानो इंडोनेशिया के लगभग आपको दुनिया के 252 मुल्क जो तकरीबन है उस सब के लिए पूर्ण करेंगे. Dia sampaikan bahwa insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima, kabulkan, Allah terima, Allah kabulkan. Maka akan bisa menghidupkan usaha agama di 152 negara di seluruh dunia.
ये मेहनत माल पे नहीं चलती, ये मेहनत औरतों पे नहीं चलती, ये मेहनत अंदर की चीज पे चलती है। हमें से भी जितना फिक्रमंद होगा कि आलम के इंसानों के लिए ये जहानत के आग से कैसे बच जाए, या तो वो कैसे पहचान ले, तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नतों को कैसे अपना ले। अगर ये हमारी फिक्र बन गई तो अल्लाह पाक मुझे आपको महबूब बना लेगी। Tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala kita menjadikan dakwah ini maksud hidup kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan kita, Allah akan terima kita, maka Allah akan jadikan kita asbab hidupnya agama, usaha agama seluruh dunia, 252 negara di seluruh dunia bisa dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kita seorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kekayaannya seorang bisa berjalan di atas dakwah, bukan karena pangkat jabatannya, hartanya, materi yang dia miliki, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pikir yang ada dalam hati. Sejauh mana kan pikir yang ada dalam diri kita, dalam hati kita kepada agama, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga buka matanya mulai bagaimana pikir menguasai diri kita, yaitu pikir untuk menghidupkan seluruh sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita. Sejauh mana pikir itu ada dalam diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pilih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jalankan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekalkan kita dalam usaha agama. चाहे मोहल्ले का फर्द हो, चाहे घर के अफराद हो, चाहे अपनी बीवी से बात कर रहे हो, चाहे अपने बच्चों से बात कर रहे हो, नियत ये करो मैं पूरे आलम के क़यामत तक आने वाले इंसानों से बात कर रहा हूँ, अल्लाह पाक उसका आपको अजर फरमाएगा। Disampaikan untuk itu, pertama niat kita harus kita perluas. Meskipun kita dakwah di Makobi, bicara dengan orang mahalah kita, bicara dengan keluarga kita sekalipun, bicara agama dengan istri dan anak kita sekalipun, yang kita hendaknya adalah berbicara kepada seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampaikan, Allah akan berikan kepada kita pahala dakwah kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia hingga hari kiamat. आप से बात कर रहे हैं, लेकिन नियत ये हो कि मैं पूरे आलम के क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों से बात कर रहा हूँ, अल्लाह उसके बहुत अजर अता करता है। Jadi meskipun kita bicara dengan satu orang, namun kita berniat kita bicara dengan seluruh umat manusia di seluruh dunia hingga hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pahala sesuai dengan niat kita. ये नियत करेंगे इंशाअल्लाह। Niat semua insyaallah. इंशाअल्लाह। एक फर्ज नहीं, मैं आलम के इंसानों से बात कर रहा हूँ। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने गुजार इस हमारे को लिखा है, सब मिलता डॉक्टरों ने बात करने की मना कर दिया, क्या बात करें आपसे सेहत मसला होता है। उस जमाने में बंगले वाली मस्जिद में लोग बहुत मिलने भी आते थे, बहुत थोड़े लोग आते थे। एक शख्स आया, मतलब मौलाना मोहम्मद इलियास साहब हमसे मुलाकात की, हमने सबको दावत देना शुरू किया, इमाम पे धीरे धीरे बात की, बात करते करते आवाज भी लेटे हुए तो उससे बैठ गए, बात करते रहे, बहुत देर से बात करते रहे, बहुत से बात करते रहे। वो एक शख्स जब चला गया तो वहां जब खुदाम थे उन्होंने कहा डॉक्टर ने आपको बात करके लिए मना किया है और एक आदमी आपको मुलाकात किया है,
आपने इतनी लंबी बात की, इतने जोर से बात की कि मैं तो उसमें आके मतलब आपने सेहत का ख्याल रखिए। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, मैं एक आदमी से नहीं, पूरे आलम के क़यामत तक आने वाले इंसानों से बात कर रहा था। और क्योंकि पूरे आलम के क़यामत तक आने वाले इंसानों की थी, हमारे आपके काम को पूरे आलम में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा दिया। Beliau sampaikan kisah tentang Maulana Ilyas rahmatullah alaih di dalam sawani beliau, di dalam biografi beliau. Kami baca dan yang ditulis di dalam persidangan bahwa beliau itu sakit, memang dari awal juga sering sakit, belum mudah sakit, sering sakit-sakitan. Satu ketika dokter setelah diperiksa, maka dokter mengatakan supaya Maulana jangan banyak bicara. Kata beliau, biasanya Pak dakwah, rotinya kuat, dakwah istimainya kuat. Juga dalam satu hari bicara terus. Maka dokter melarang untuk saat ini jangan banyak bicara, kurangi bicara, cara secukup. Kalau bisa satu kata disampaikan, satu kalimat saja, harus 10 kalimat. Kalau 10 kalimat menyampaikan 10 kalimat, tapi bisa diringkas satu kalimat. Maka kemudian datang satu orang datang. Ketika itu di Nizamuddin juga masih jauh dari kota, yang datang ke Nizamuddin nggak banyak seperti sekarang, 1-2 orang datang. Maka datanglah satu orang ke atas ketemu sama beliau sholat. Maka pertama beliau bicara pelan-pelan, tapi lama-lama tambah keras suara. Tadinya beliau berbalik, tadi duduk, karena dia diajak bicara satu orang, dan dengan kekuatan penuh beliau berbicara. Awalnya pelan, lama-lama jadi keras suara, seperti bicara dengan satu ruangan orang, padahal cuma satu orang. Maka lama kali beliau bicara. Setelah selesai, orang tadi pun pamit untuk pulang kembali. Maka para pelayan beliau, khadim beliau, mengingatkan beliau, Maulana, apa kok berbicara dengan suara yang keras seperti itu? Kata cuma satu orang dengan suara pelan pun bisa. Dan dokter sudah melarang jangan banyak bicara dulu. Apa bicara panjang lebar sama dia? Cuma satu orang. Maka Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, gimana aku bisa memahamkan kalian? Kalian tidak tahu, saya itu melihat, saya memandang bahwa saya itu berbicara dengan seluruh umat manusia di seluruh dunia hingga hari kiamat. Itu niatnya. Meskipun satu orang, tapi saya niatnya seluruh. Niat jawab. Kenapa orang malu? हमारे अपने स्कूल को आप ऐसे बनाओ, हर फर्द दावत में काम को पूरे आलम के इंसानों की नीयत से कर रहा हो, जो दूसरों की कदर करता है, उसको महबूब बनाते हैं, महबूब नहीं, उसको मुस्लिम दुआ बनाते हैं। हदीस पाक में आता है, जिसका खुलासा है, तो सारे मुसलमानों के लिए 27 मरतबा मक़फ़रत की दुआ रोज़ाना करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको मुस्लिम दावत भी बनाते हैं, और अल्लाह ताला उसके जरिए से इसे पाकर वादे लिखा है, अल्लाह ताला उसके जरिए से इंसान नहीं लिखा है, जमीन के सारे मखलूकात को रिज़्क़ अता फरमाते हैं। इतनी बड़ी बात, जब मुस्लिम दावत भी बनेगा और जरिया बनेगा पूरे आदम के जमीन पे बसने वाली मखलूकात के रिज़्क़ का। क्या करता है?
रोजाना सच्चाई मुतबा ईमान वालों की मफरत की दुआ करना है। अल्लाह पाक अपने बंदों को इतना पसंद करते हैं कि जो उनकी मफरत की फिक्र करता है अल्लाह को उससे और बनाते हैं। Jadi yang mulia begitu setiap amal dakwah yang kita buat hendaknya kita niatkan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia hingga hari kiamat. Sebab orang yang memikirkan orang lain itu akan dicintai oleh Allah SWT. Tidak akan dijauhkan, tidak akan dihalangi dari rahmat dan keberkahan Allah SWT. Tapi akan ditetapkan oleh Allah dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat yang mulia ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang setiap hari dia berdoa maghfirah untuk orang-orang beriman dengan singgung apapun, minta istighfar, terserah Allah maghfirli wal walidayya wal mu'minina wal terserah mau yang mana saja. Pokoknya istighfar untuk diri kita dan untuk seluruh orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya orang yang mustajabud da'wah, orang yang doanya Allah kabulkan. Baca istighfar 27 kali dalam sehari untuk orang-orang beriman, Allah akan jadikan dia orang yang mustajabud da'wah. Dan yang kedua, melalui dia dengan asbab dia, dengan barokahnya dia bacaan istighfar tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada bukan hanya manusia, tapi kepada seluruh penghuni bumi, seluruh makhluk yang ada di bumi ini mendapat rezeki dari Allah SWT dengan sebab dengan barokah bacaan istighfar 27 kali yang kita ucapkan. इसलिए है कि अल्लाह के बंदों का खैर खा है। जो अल्लाह के बंदों का खैर खा होता है अल्लाह ताला उसको महबूब बना लेते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने आप को, अपने घर की अफराद को अल्लाह के बंदों का खैर खा होगा। ईद उल अजहा का मौका है। रसूल पाक इस्लाम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जानिब से एक जानवर को ज़िबा कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया है फातिमा, इस जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं उसके लिए अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं इसके जानिब से कुर्बानी दी जाती है। सोच हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी आला। ऐसी सोच अपनी औलाद की बनाओ, अपने बेटों की बनाओ, अपनी बेटियों की बनाओ, अपनी बीवी की बनाओ। हज़रत फातिमा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, ये सवाल वही कर सकता है जिसकी सोच वसी हो, ये सवाल वही कर सकता है जो लोगों का खैरखा हो। अल्लाह ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, ये किताब जो आपने फरमाया है इसमें अहले बैत के लिए है, ये सारे मुसलमानों के लिए, सारे मुसलमानों को सोचना, सारे मुसलमानों की खैरखाई को सोचना, ये सबक मिलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है फातिमा, ये पैगाम अहले बैत के लिए नहीं, सारे मुसलमानों के लिए है। तो अल्लाह की कुर्बानी दी। मुझे करना है कि बेटी फातिमा लाडली और सोच रही पूरे आदम के मुसलमानों को जो बयान करने वाली है। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita niat setiap amal kita, dakwah kita, amal kita niatkan untuk seluruh umat manusia, seluruh dunia hingga hari kiamat. Karena memikirkan orang lain. Maka dalam doa tadi, kenapa begitu besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang membaca doa itu tadi? Karena dalam doa itu kita memikirkan seluruh umat manusia, seluruh orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, seluruh orang Islam, laki-laki dan wanita di seluruh dunia hingga hari kiamat. Bahkan yang masih hidup dan yang sudah wafat, semua kita hadiahkan, kita niatkan untuk dalam doa itu kita mintakan ampun untuk seluruh orang-orang beriman, laki-laki, wanita yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Masih yang dirahmati Allah SWT, itulah sebabnya sehingga begitu besar pahala yang diberikan kepada orang yang membaca doa itu.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah beliau menyembelih korban ekor domba. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pahala bahwa orang yang menyembelih korban hewan korban, maka dia dapat pahala kebaikan sebanyak bulu yang ada di badan domba. Banyak bulu. Allah berikan dia kebaikan akan. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta, beliau bertanya, pertanyaan ini hanya akan diajukan oleh orang yang dalam dirinya ada pikir seluruh alam, ada pikir seluruh umat manusia, memikirkan orang lain. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala itu hanya untuk kita Ahlul Bait ataukah untuk seluruh orang Islam siapapun dia yang berkorban? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai putriku Fatimah, pahala itu untuk seluruh orang Islam siapapun yang berkorban, menyembelih hewan korban, dia dapat pahala seperti itu. Ini tidak khusus hanya untuk keluarga Ahlul Bait saja, tidak, tapi untuk seluruh orang. Seperti itu beliau menanyakan adalah kata untuk pikirkan, jangan sampai hanya untuk Ahlul Bait, tapi bagaimana pahala itu juga dapat oleh seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. जो अपनी कौम का फैसला है और अपनी कौम की भलाई करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस फैसले की जज्बे की वजह से सबसे पहले उसको अपना महबूब बनाते हैं, ईमान को बढ़ाते हैं, यकीन को बढ़ाते हैं। अगर ये खैर का जज्बा चूंटी में भी है, अगर चूंटी को भी कबूल करते हैं, लाके हमारे पास में वाक़या नकल किया नमाज से, ये चूंटियां अपने रिस्क में, अपने रिस्क की तलाश में मैदान में चल रही थी। एक चूंटी ने अपनी कौम की चूंटियों को गश्त किया और उनसे कहा है, चूंटियों दिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान साहब में सुना रहा है, वो दाखिल हो जाओ। चूंटी अगर अपनी कौम की खैरखाई की नजर में कष्ट में है, अल्लाह को ज्यादा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान में नकल किया। तो सूरत में इसका नाम ही नमल है, नमल के लिए चूंटी वाक़या नकल किया, वो सारी चूंटियां दिलों में दाखिल हो गई। अल्लाह ताला ने इस पूरे वाक़े पर सुलेमान अलैहिस्सलाम को फरमाया। तफसीर इब्न कसीर में ये वाक़या लिखा है और ऐसा तो इससे ही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस वाक़े को जितना मुस्कुरा है, लेकिन तफसीर में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की अल्लाह से, अल्लाह उस चूंटी से मेरी मुलाकात करा दी थी। जो किसी का फैसला होता है वो ऐसा अजीम अल्लाह से कराते हैं कि उससे मुलाकात की तमन्ना पूरे दुनिया का बादशाह इसकी हवाओं पर, परिंदों पर, दरिंदों पर, जिनों पर, सब लोग पर थी। ऐसा बादशाह अजीम और मुलाकात की तमन्ना कर रहा है, अल्लाह मेरी मुलाकात करा दीजिए उस चूंटी से। इसका कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस चूंटी की मुलाकात तय करवाई। बादशाह वक्त एक चूंटी से मिलने जा रहा है और मुलाकात तय हुई। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी से कहा, ऐ चूंटी, हमारे मेरे बादशाह जी हैं, वो तेरी हजतों को मुझे बता और तू पूरा कर दो। उस चूंटी ने कहा, जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है वो मेरी सारी हजतों को पूरा करता है। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanahu wa taala akan meningkatkan imannya kalau angkat kepala di kanan. Benar. Nah. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala maka meskipun itu Allah mengatakan tingkatkan imannya, Allah akan naikkan yakinnya. Meskipun hanyalah seekor semut, hewan, seekor semut, Allah ceritakan kitanya dalam Al-Quran. Dan Allah jadikan sebagai nama dan sebuah surah, itu surah An-Naml, surat semut. Dalamnya ada kisah semut yang dia memikirkan keselamatan teman-temannya, memikirkan keselamatan bangsanya. Jika tentara Nabi Sulaiman alaihissalam mau lewat, maka dia jauhlah, dia keliling. Kemudian dia menyerukan kepada semut-semut, wahai semut, masuklah kalian ke dalam liang kalian. Jika tidak, maka Sulaiman alaihissalam dan tentaranya akan menindak kalian. Maka perbuatan semut ini disukai oleh Allah SWT. Dia memikirkan keselamatan bangsanya, memikirkan keselamatan teman-temannya, saudara-saudaranya. Hingga Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Quran kisahnya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau di dalam Al-Quran katakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tentunya mendengar ucapan Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kepahaman tentang bahasa semua hewan, bahasa semua bangsa-bangsa. Beliau jadi oleh Allah raja, jadi oleh Allah kerajaan yang meliputi semua makhluk. Makhluk bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin, bangsa hewan-hewan, burung-burung, binatang buas semua. Di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam duduk. Angin pun Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mendengar dalam tafsir di sana dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan semut. Minta, ada seorang raja yang kekuasaannya meliputi seluruh dunia dan seluruh bangsa, seluruh makhluk. Tapi ingin bertemu dengan seekor semut tadi, rajanya semut, ratunya semut tadi, yang telah memikirkan kebaikan teman-temannya, bangsanya. Akhirnya dibuat jadwal pertemuan. Setelah ketemu, maka Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada semut tadi, wahai semut, Allah telah memberi aku kekuasaan kerajaan yang meliputi seluruh bangsa-bangsa, seluruh makhluk yang ada di dunia. Jadi saya tawarkan kepada kamu perlu hajat apa? Ada hajat, ada keperluan yang bisa aku penuhi. Maka semut mengatakan, wahai Tuan Raja, Allah telah menciptakan saya, Allah yang menciptakan saya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi seluruh hajat-hajat saya. Jika saya tidak perlu kepada bantuan, जो का काम करेगा, दूसरों को करता रहेगा, अपना कोई मफाद नहीं, अपनी कोई गरज नहीं, अल्लाह के लिए अल्लाह का काम करेगा, अल्लाह के मखलूक को रहम करेगा, और खैर की डरने से अल्लाह की मखलूक से मुलाकात करेगा। सबसे पहले अल्लाह उसको अपना तकर्रुब अता फरमाएंगे और उसके ईमान को बनाएंगे, ईमान को बनाएंगे। चुनांचे हज़रत सुलेमान साहब ने साफ किया, लेकिन जी कोई तो हाजत ऐसी बता जिसको मैं पूरा करूँ, मुझे ख्वाहिशात मिली हुई है, मुकाबले दी है। छुट्टी भी का अच्छा है, तो इसरार कर रहे हैं, ये तो इसरार कर रहे हैं। उस छुट्टी ने कहा, अच्छा आप मेरा रिस्क बढ़ा दीजिए और मेरी उम्र बढ़ा दीजिए, मेरा रिस्क बढ़ा दीजिए, मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। तो सुलेमान साहब ने कहा, ये दोनों भी काम में नहीं कर सकता, मैं आजिज हूँ। अल्फाज तफसीर मिलता है कि मैं आजिज हूँ। तो छुट्टी ने कहा, ऐसे आजिज से अपनी हाजतों को क्या मांगना, आप जाइए अपना काम कीजिए, मेरी हाजतों को पूरा करने वाला अल्लाह है। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah orang yang memikirkan kebaikan orang lain, memikirkan kebaikan orang lain,
maka Allah SWT akan menjadikannya hamba yang dicintai, dan juga Allah akan meningkatkan imannya, Allah akan naikkan imannya, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak menginginkan manfaat, faedah apapun daripada manusia, daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata pada sebutan, wahai Semut, Allah berikan kerajaan, saya bisa memenuhi hajat kamu. Jadi saya minta tolong kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sebutkan 1-2 hajat yang bisa aku lakukan, yang bisa aku kerjakan untuk kamu. Maka Semut tadi mengatakan, bahwa ini raja maksa juga. Baik, kalau kamu mau memaksa, jadi saya minta 2 perkara saja. Ya apa? Tolong tambah rezeki saya dan panjangkan umur saya. Nabi Sulaiman kata, kalau 2 perkara itu saya ajiz, tak bisa, saya tak berdaya, saya tak bisa. Kalau Nabi mengatakan saya tak bisa, saya tak mampu, kalau itu. Akan Semut mengatakan, kalau kau tak mampu, tak punya kemampuan, udah urusin sendiri aja urusan kamu, kalau berlagak untuk menawarkan hajat, menyempurnakan hajat saya. Kalau tak kau maksa tadi, maka saya sampaikan hajat saya. Bisa nggak engkau menambah rezeki saya dan engkau bertambah umur saya? Nggak bisa ya. Makanya dia dirahmati Allah SWT. Orang yang menginginkan kebaikan orang lain, Allah SWT jadikan dia makhluk yang dicintai oleh Allah. Kemudian Allah akan meningkatkan imannya, meningkatkan yakinnya, meluruskan keyakinannya kepada Allah SWT. Allah के बंदों की मोहब्बत में अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत में अल्लाह के लिए काम को करो। अल्लाह इस काम करने वाले को दुनिया के एतबार से भी इज्जतों से नवाजेंगे और उखरवी एतबार से आलीशान मर्तबा, ऊंचा मुकाम, नूर के मेंबर अल्लाह तक फरमाएगी। हदीस पाक का खुलासा है, अगर जमाने को जब मुताबिक भी है, यह हदीस हयात सावल भी है, यह हदीस इमाम अबन रहमतुल्लाह ने इन उर्दू में लिखी है। खुलासा हदीस, क्या मैं तुम्हें वो लोग न बता दूं, क्या मैं तुम्हें वो लोग न बता दूं जो कयामत के दिन नूर के मेंबर पर होंगे। वो अंबिया नहीं होंगे, वो शौदा नहीं होंगे, लेकिन अंबिया और शौदा उनका रक्ष करते होंगे। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप फरमा दीजिए वो लोग कौन होंगे जो अंबिया नहीं, शौदा नहीं और नूर के मेंबरों को होंगे, तो अंबिया और शौदा को रक्ष करते होंगे, वो कौन लोग होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करते होंगे। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करते होंगे और जमीन पे चलते होंगे, देखिए वो महबूब करते होंगे। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan bahwa orang yang memikirkan kebaikan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan naikkan imannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat, dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan setelah mati di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya, Allah akan naikkan maqamnya. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala dalam kitab ayat 19 juga ada, dan dinukil oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sahabat-sahabatku, maukah aku beritahukan kepadamu suatu kaum yang mereka bukan nabi dan juga bukan syuhada,
nabi, tapi mereka, para nabi, para syuhada, orang-orang akan merasa iri dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendudukkannya pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di atas bukit-bukit pasir. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mengatakan, beritahukanlah kepada kami ya Rasulullah, siapakah mereka ya? Kata Nabi SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang mendekatkan manusia kepada Allah dan mendekatkan Allah kepada manusia. Mereka berjalan, jika mereka berjalan, ketika jalan mendaki maka mereka membaca takbir, dan ketika jalan turun maka mereka membaca subhanallah. Jadi orang-orang itu kerjaannya mendekatkan manusia kepada Allah, merayu manusia akan kembali kepada Allah, dekat dengan Allah, dan kemudian berdoa kepada Allah, merayu Allah agar Allah SWT mencurahkan rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya kepada manusia. Itulah orang-orang yang di hari kiamat nanti akan dimuliakan oleh Allah, dihidupkan di atas mimbar-mimbar yang bercahaya, bernaman harus di atas bukit-bukit pasir. Makom itu Allah berikan karena di dunia dia memikirkan orang lain. Maka kita insya Allah berjalan di atas permukaan bumi dan kita menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan. Insya Allah. ये जमीन पर चलना, ये उम्मीद की पहचान है। हर आस आदमी से मिलना, ये उम्मीद की पहचान है। कोई गरज नहीं, कोई चाहत नहीं, एक ही चाहत है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की पहचान मिल जाए। वो देख तो कहूँ करना, ये इतनी बड़ी मेहनत है, यह ऐसा बड़ा काम है कि सहाबा ने जब इस काम को मुकम्मल बनाया, और सहाबा जिन्हें कोई पहचानता नहीं था, जहालत के नाम आने से पहले जहालत के एतबार से और जुल्म के एतबार से और बेदीनी के एतबार से तो अपना एक पहचान रखते थे, तो बाद में ऐसे बने, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, तुम किसी की भी इब्तिदा कर लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berjalan di atas permukaan bumi supaya setiap manusia seluruh kebaikan ini adalah tanda umumnya. Berjalan kemana-mana kita jalan, kemudian jumpa dengan setiap orang, itu adalah ciri umumnya, kerja umumnya. Maka kita kerjakan dakwah, berusaha dakwah dengan umumnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka telah menjalankan usaha ini, menjadikan dakwah maksud hidupnya. Dan mereka buat usaha dengan umumnya, sehingga tidak merasa dirinya ini istimewa dan orang, maka beliau mendudukkan dirinya, para sahabat mendudukkan dirinya seperti orang lain. Ketika mereka berjalan bersama umumnya manusia, maka tidak dikenali bahwa ini adalah sahabat, sama seperti yang lain dalam kesederhanaannya, dalam segala hal. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka, para sahabat, bahwa sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Maka siapapun yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan hidayah, kalian akan mendapatkan petunjuk. मेरे सहाबा सितारों के मालिक है, तो किसी एक इक्तदा कर लोगों कामयाब हो जाओगे, कब हुआ? फिर सहाबा ने इस मेहनत को जिंदगी का मकसद बनाया। अल्लाह पाक के पास महबूबियत कब आई? जब उन्होंने अल्लाह के काम को जिंदगी का मकसद बनाया। और अगर यही सहाबी
اس کام سے پیچھے رہتے ہیں، نکلنے میں دیر کرتے ہیں، تو یہی محبوب صحابہ سے اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ تبوک کے موقع پہ وہ 30 صحابی، جن کے تو بدری ہے، حالانکہ بدریوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، وہ 30 صحابہ جو نکلنے میں دیر کر کے نکلے تھے، اللہ صلی اتنا ناراض ہوا کہ 50 دن تک ان سے بات نہیں. Artinya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedudukan sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang di langit. Kapan sahabat mendapatkan derajat itu? Ketika para sahabat mereka menjadikan dakwah maksud hidup mereka. Dalam setiap saat mereka mendahulukan, mengutamakan takaza-takaza dakwah atas perkara-perkara yang lain. Kapan para sahabat mendapat mahbub dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika para sahabat menjadikan dakwah maksud hidup mereka. Namun sahabat yang telah mencapai mahbub seperti itu, apabila mereka terlambat saja dalam keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah kepadanya, Allah akan murka kepadanya. Bagaimana kisah dalam perang Tabuk, 3 orang sahabat yang diantaranya 2 adalah sahabat Badar yang ikut perang Badar, maka padahal kepada orang yang ikut perang Badar Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan Allah telah berfirman, kerjakanlah sesuka kamu, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Namun demikian ketika mereka tertinggal dari berangkat ke Tabuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memboikot mereka selama 50 hari, tidak boleh dijawab salamnya, tidak boleh diajak berbicara. یہ کام اگر صحابہ کرتے ہیں تو مقبول محبوب ہے. وہی صحابہ جو تو بدری ہے، اگر اس کام میں ایک مرتبہ تینوں کے بارے میں آتا پہلی مرتبہ وہ نہیں نکلے تھے، پہلی مرتبہ. اور اس سے پہلے جب حکم آیا تب نکل گئے، پہلی مرتبہ نہیں نکلے. ایک مرتبہ بھی اللہ کے دین کی محنت میں سستی کرو گے تو مقبول محبوب صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کو رلاتے ہیں. 4 دن ہوتے رہے. ایک بہت بڑے عالم نے فرمایا کہ مدینے سے تبوک، تبوک سے مدینہ پورے سفر میں 50 دن لگے. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو 50 دن رلایا. 50 دن کیوں رلایا؟ کہ تم 50 دن کی محنت سے اپنے آپ کو کیوں روکا؟ اتنا روئے کہ زمین تنگ ہو گئی، اتنا روئے پوری شیطان بھی ان کے قریب نہیں آیا، ان کے سلام کا جواب نہیں بھی دیتا. 40 دن کے بعد اللہ کے نبی کا حکم آیا اپنی بیویوں کو بھی زیادہ کٹ کرو. وہ شریعت جو میاں بیوی کو قریب کرتی ہے، اس شریعت کا سب سے بڑا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. کیوں؟ یہ قصور چھوٹا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا قصور ہے، یہ تو بہت بڑا قصور ہے. 50 دن رات رہے، 50 دن میں دن رات روتے رہے، نکاح نہیں کیا، شراب نہیں پی، اور برا کام نہیں کیا. آج امت سارے برے کام کو برا سمجھتی ہے، بے شک برے وہ کام، بے شک وہ برے کام ہے. ایک کسی زانی سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے بات بندی کی، کسی چور کے آپ نے بات بندی کی. بلکہ زانی کو جب پتھر مار رہے تھے تو کسی نے کوئی غلط الفاظ کہہ دیا، خبردار اسے نہ کہو. ایسی توبہ کی ہے اس کی توبہ کو اگر پورے حجاز میں تقسیم کر دی جائے اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے. لیکن یہ دعوت کے کام میں سستی کرنا، یہ دعوت کی محنت میں نہ نکلنا، اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ نبی جو بہت اپنی امت پہ شفیق ہے، مہربان ہے، وہ نبی بھی سلام کا جواب نہیں دے رہا، وہ نبی بھی بات نہیں کر رہا. میرے دوستوں سمجھو یہ واقعہ پوری امت کے لیے سبق ہے.
कि दावत की मेहनत से दीन के काम में सुस्ती करना अल्लाह के नबी को पसंद नहीं है। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sahabat mereka orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Selama mereka selalu mendepankan usaha agama, usaha dakwah, maka mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maqam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan seperti bintang-bintang di langit. Namun hari mulia ketika mereka hanya satu kali saja, mereka adalah orang sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar, ikut, semua ikut, gak pernah terlambat, gak pernah terlambat di belakang, gak pernah absen. Mereka ikut dalam setiap perjuangan. Namun satu kali itu saja. Dan katakan itu mereka pertama kali mereka itu bermalas-malasan sehingga tertinggal di belakang, terlambat sehingga nggak bisa berangkat. Maka sekali mereka bermalas-malasan, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka menangis selama 5 bulan. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan perjalanan Nabi dan sahabat ke Tabuk pulang pergi memakan waktu kurang lebih 5 bulan. Maka atas keterlambatannya itu, kemalasan mereka sehingga mereka tidak bisa ikut berangkat. Kan mereka kena malas, beralasan mau nanti bisa nyusul. Sampai Rasulullah dan sahabat kembali, mereka tidak nyusul itu karena disibukkan oleh urusan-urusan dunia. Berarti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan 40 hari tidak boleh diajak. Salamnya tidak dijawab, diajak bicara. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan Dhaqat alihul ardh, bumi menjadi sempit bagi mereka. Bagaimana tidak sempit? Salam tidak dijawab. Orang banyak tapi tidak ada yang mau diajak bicara. Bahkan kerabatnya, saudaranya, keluarganya pun tidak boleh dekat dengannya, tidak boleh menjawab salamnya, tidak boleh bicara dengannya. Maka 50 hari, 50 malam mereka hanya menangis. Kemudian setelah 40 hari datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka meninggalkan istri-istri mereka. Jauh syariat, yang mana syariat itu datang untuk menyatukan suami istri, laki-laki wanita hidup dalam harmonis. Tapi karena mereka meninggalkan, berlambat-lambat, bermalas-malas sehingga tidak berangkat satu kali dalam sepanjang hidup mereka. Sebelumnya mereka tidak pernah ketinggalan, terus selalu keluar. Sekali itu saja mereka bermalas-malasan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mereka berpisah dari itu. Artinya tidak satu rumah, tidak tidur bersama dengan. Karena sebagian istri pindah rumah dulu. Ada dari mereka yang istrinya bilang sejak dia kena hukuman 3 pernah menyentuh saya, dan dia sudah tua, perlu cepat izinkan saya, izinkan saya, sudah tak boleh satu rumah. Sampai datang keputusan dari Allah SWT bahwa Allah mengampuni mereka. Padahal mereka tidak berzina, mereka tidak mencuri, mereka tidak mabuk-mabukan. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahabat yang melakukan zina saja, maka seorang sahabat datang, ya Rasulullah, bersihkan saya. Kenapa setelah bersih? Akhirnya ditegakkan hak, dirajam karena dia sudah menikah dan berzina. Maka ketika dirajam kemudian darahnya muncrat dan mengenai salah satu sahabat yang melemparkan rajamnya, maka sahabat tadi mencela dia, kena darah dia. Dan dia mencaci maki sahabat yang dirajam tadi. Maka Rasulullah bersabda, jangan katakan seperti itu. Dia telah bertaubat. Seandainya taubatnya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, maka akan menjadi. Kepada orang yang berzina, Nabi SAW bersabda seperti itu. Tapi ini kenapa sampai 50 hari dibuat nangis oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka bermalas-malasan, terlambat satu kali dalam hidup mereka tidak keluar jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kisah ini pelajaran bagi kita hati yang mulia betapa tingginya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amal keluar kita hari ini dan memang seharusnya mabuk-mabukan, minum arak itu adalah perbuatan jahat, perbuatan buruk, dosa. Begitu juga mencuri, berzina itu adalah perbuatan dosa dia. Tapi hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jarang yang menganggap, merasa memahami bahwa bermalas-malasan dari keluar jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang yang memahami perkara itu, sehingga banyak di antara kita yang bermalas-malasan dari keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan perkara-perkara yang lain, padahal itu sama dengan menarik murka Allah. Sahabat yang sepanjang hidupnya mereka berjuang di jalan Allah, kali saja mereka terlambat, tertinggal, maka Allah Subhanahu wa taala membuat mereka menangis selama 5 bulan. दावत की मेहनत में सुस्ती करना, दावत की मेहनत में कोताही करना, ये अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि महबूब साहबा है, दावत की सुस्ती की है, हमें वो पसंद नहीं है। आज हमारा हाल ये है कि मस्जिद का मशवरा छूट रहा है, छूट जाए, तालीम छूट रही है, छूट जाए। कई महीनों से घर में तालीम नहीं हुई, छूटते रहे। कई महीनों से हफ्ते का गश्त नहीं हुआ, उससे कोई हफ्ता फर्क नहीं। दूसरे गश्त कई महीनों से नहीं गए, हम पे कोई असर नहीं। मैंने के तस्वीर तो क्या 3 दिन भी नहीं लग रहे, उसका कोई असर नहीं। सामना खरूज हमारा आगे पीछे हो रहा है, अब इसका कोई असर नहीं। वजह यह है कि दावत की महत्व हमने समझा ही नहीं है। अब अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हयातुस सहाबा में है, एक फतवा अल्लाह के रास्ते नहीं गए थे, एक फतवा। बेज़बाद रसूल ये घर में सूरह पाक साहब कई महीने कयाम किया है, वो मेज़बान रसूल एक पल अल्लाह की राह से नहीं गए, इसलिए कि उस जमात का अमीर नौजवान था। जमात के सब में नहीं आता, जिंदगी भर बोलते रहे। हयातुस लिखा है, रोकर बयान करते थे कि मैंने अमीर को क्यों देखा, अल्लाह के हुक्म को क्यों नहीं देखा, तो अल्लाह के हुक्म को देखता। रोते थे और बयान करते थे। मेरे दोस्त मेरे भाइयों, आज हमारे कितने 3 दिन आगे पीछे हो गए, कितने रोजाना 4 घंटे आगे पीछे हो गए, कोई अफसोस नहीं, कभी रोना नहीं। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan bahwa para sahabat radhiyallahu taala ajma'in, mereka orang-orang yang telah dekat dengan Allah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan mereka seperti bintang-bintang di langit. Namun hati yang mulia karena mereka tertinggal bermalas-malasan dari keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman seperti itu. Sahabat radhiyallahu taala ajma'in. Hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bagaimana dengan kondisi kita? Kita ini banyak bermalas-malasan dalam menjalankan usaha dakwah. Kenapa? Karena kita belum paham dakwah. Kisah sahabat itu adalah memberikan kepada kita betapa tingginya kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita biasa saja. Tertinggal musyawarah harian kita anggap biasa. Tertinggal taklim harian kita anggap biasa. Tertinggal taklim rumah kita anggap biasa. Tertinggal nisab 3 hari kita anggap biasa. Tertinggal daulah 1, daulah 2 kita anggap buat, kita anggap biasa. Nggak ada pesan apapun, nggak ada kesedihan apapun. Itu karena kita nggak paham tentang besarnya agungnya kerja dakwah. Nisab 40 hari tahunan maju mundur, geser-geser waktunya, kita nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa. Padahal itu menyebabkan murkanya Allah kepada kita. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu, sahabat yang telah mendampingi Nabi waktu Rasulullah baru hijrah ke Madinah. Rasulullah tinggal di rumah beliau untuk beberapa lama, sampai bangun masjid, bangun rumah baru beliau pindah.
berbulan-bulan, beberapa bulan beliau tinggal di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Namun karena beliau satu ketika tidak keluar, nisab 1 tahun, nisabnya tertinggal 1 tahun beliau tidak keluar, karena beliau melihat ketika itu amirnya anak muda. Karena amirnya anak muda maka beliau tidak keluar tahun ini. Namun setelah itu beliau menangis. Seumur hidup beliau bertaubat menangis. Kenapa? Amir menangis, beliau mengatakan, kenapa kamu gak keluar hanya gara-gara melihat amirnya anak muda? Kenapa kau gak melihat perintah Allah SWT? Kau keluar di jalan Allah SWT dalam perintah Allah. 1 tahun beliau gak bayar nisab, gak keluar di jalan Allah SWT. Umur hidup sampai akhir hayatnya beliau menangis menyesali. Nanti yang dirahmati Allah SWT, kata sahabat, paham keagungan kebesaran kerja dakwah. Hari ini kita enggak memahami besarnya agungnya kerja dakwah. Banyak amal kita yang tertunda, ya banyak yang kita geser-geser waktunya. Kita enggak sempurnakan waktu setiap hari 2 jam setengah dan kita merasa enggak apa-apa. Enggak ada perasaan sedih sedikit pun dalam hati kita. Kita enggak pernah nangis gara-gara makom kita, amal kita, intikoli kita enggak kita kerjakan tepat waktunya. Itu enggak terpengaruh sedikit pun di hati kita, karena dalam hati kita tidak ada keagungan kerja dakwah. Kita belum menjadikan dakwah sebagai maksud hidup kita. करो रोजाना की आमाल, रोजाना मस्जिद की आबादी के लिए 8 घंटे, मस्जिद की तालीम, मस्जिद का मशवरा, अपनी घर की तालीम एहतमाम से करेंगे। मस्जिद की आबादी की मेहनत के जरिए से मस्जिद को आबाद करेंगे, लोगों को बैठकर कीमत से बुलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, घर से हदीस से बिठाएंगे, दावत के अमल पे बिठाएंगे और हमारे दावत के बाद 4 महीने की तश्कील करेंगे। हर एक से 4 महीने मांगेंगे, हर एक से मस्जिद के वक्त मांगेंगे, उसको वसूल करेंगे। अपने मोहल्ले के उलमा, मस्जिद के इमाम दरख्वास्त करके जो मस्जिद के वक्त मांगेंगे और उसके बाद हम खुद भी अपने बच्चों को लाकर और मोहल्ले के लोगों को लाकर, मोहल्ले के बच्चों को लाकर उनसे चीज सीखेंगे। हजार मस्जिद मकतब बन जाए और मुसलमान तालिब इल्म बन जाए और आलिम मौलिम बन जाए। और चौथा काम, अपने घर की मसूलात को, बच्चों को फिक्र करते हुए घर की तालीम से 5 आमाल और हमसे वही तालीम और अल्लाह के राह में के मसूलात को निकलना 3 दिन रिजल्ट दिन और फिर चिल्ला। हमारी बेटियां 3 दिन जमात के साथ जा सकती है, एक जमात में 2, 10 दिन में जा सकती है, एक जमात में 2 जमात के साथ रोजाना के अमाल के इंतजाम से करेंगे। Maka boleh sampaikan tentang apakah dari hari ini hendaknya kita buat niat, buat keputusan untuk menjadikan dakwah maksud hidup kita, memberikan waktu untuk amal harian sepenuhnya, setiap hari minimal 2 jam setengah sampai 8 jam untuk makmurkan masjid kita, taklim rumah dengan 5 amal, taklim masjid, musyawarah harian, semuanya kita kerjakan dengan penuh kedisiplinan. Dan kemudian kita berikan waktu 2 jam setengah untuk UMM, usaha makmurkan masjid. Di mana dalam usaha makmurkan masjid maka ada yang istiqbal, orang yang datang dari luar, ada makna di luar masjid kita bawa ke dalam masjid, dudukkan dalam majelis taklim, kemudian dudukkan dalam majelis dakwah. Setelah itu ditazkir 4 perkara. Yang pertama kita tazkir untuk keluar jalan Allah SWT 4 bulan. Paham? Yang kedua, kemudian kita minta waktunya untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga kita minta waktu daripada alim ulama, imam masjid, ustaz-ustaz yang ada di sekitar masjid untuk memberikan waktunya di masjid untuk mengajarkan ilmu masail kepada umat. Dan kita sendiri duduk dalam majelis masail ini. Saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan semua umat yang ada di sekitar masjid kita ajak untuk duduk dalam masail tersebut. Supaya apa? Supaya masjid jadi seperti maktab. Dan masjid jadi maktab,
Setiap orang Islam mereka menjadi santri, menjadi penuntut ilmu agama, dan seluruh alim ulama mereka menjadi muallim, menjadi pengajar, sehingga masjid jadi maktab, jadi madrasah. Dan kemudian yang keempat, kita taskil tentang usaha masyru'ah, yang menunjukkan taklim di rumah dengan 5 amal, kemudian menghantar wanitanya, istri anak-anak wanitanya ke taklim muhalam mingguan, kemudian keluar 3 hari, 10 hari, 3 hari, 3 bulan sekali, 10 hari, setahun sekali minimal, di mana dalam keluar dalam Allah SWT kita bisa membawa anak gadis kita untuk keluar 3 hari dalam satu jamaah. Maka apabila 5 pasang, maka 2 pasang bisa membawa anak gadis. Apakah masing-masing 1 pasang bawa 1 anak, ataupun 1 pasang bawa 2 anak gadis. Pokoknya dalam satu jemaah 5 rijal maksimal 7, maksuratnya 7. Nah kalau sudah 6 pasang, maka hanya diperbolehkan 1 pasang membawa anak gadis. 6 rijal 7 maksurat. Dalam satu jemaah maksimal maksuratnya 7. Nah ini bisa kita bawa mereka keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sama insyaallah. हफ्ते के आवाज हफ्ते का हमारे मंदिर का गश्त उमूमी, दूसरे मंदिर का गश्त उमूमी, हफ्ते का मशवरा हफ्ते का, हफ्ते की शब्दारी शिद्दत असर से इशार, हफ्तेवारी तालीम से अपने खवातीन को रवाना करना, हफ्तेवारी तालीम स्कूल कॉलेज की बच्चियों की उस वक्त स्कूल कॉलेज के बच्चों को रवाना करना, ये हफ्ते के अमल हमें एहतमाम से करना है अगर अल्लाह पाक ने सबसे महबूब बनाए रखे और तरक्की करना। Kemudian amal mingguan, daulah 1 umumi, daulah 2 umumi, hadir malam Sabtu tadi umumi, musyawarah mingguan halaqah, kemudian menghantar istri, hadir dalam taklim muhalah mingguan, membuat taklim muhalah mingguan untuk siswi dan mahasiswi yang sudah balik. Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kerjakan dengan disiplin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima kita, Allah akan mencintai kita, dan Allah akan memajukan kita, meningkatkan iman kita. Kरेंगे इंशाअल्लाह। महीने के अमाल हर महीने 10 दिन 3 दिन अपनी जमा बनाकर लिहाजों में लिया, दूसरे 3 दिन तकाजे की जमात के मस्जिद बन जाए उसको ले जाना, या देहात की और बजाय उसको ले जाना, या दूसरा का जम कर रहे वहां से ले जाना। 3 से 3 दिन अपनी मुस्कान की जमात बनाना, 1 महीने में बीवी को लिया बेटी के साथ, अगले महीने माँ को लिया सगी बहन के साथ, उसके अगले महीने दादी को लिया या नानी को या खाला को, उससे अगले महीने फिर बीवी का नंबर आ गया, और 30 महीने मुस्कान के 3 दिन लगाना, 3 दिन बचा 1 दिन स्कूल कॉलेज के बच्चों की जमा बनाना अपने साथ लिया। स्कूल कॉलेज के बच्चों के 24 घंटे पहले 3 दिन मतलब लग जाए। मदरसे के तलबा के हफ्ते में 4 छुट्टियां है तो 4 छुट्टियां लग जाए। कभी मदरसे के बच्चों को ले जाना, कभी स्कूल कॉलेज के बच्चों को ले जाना। इसी तरीके से महीने में मखाना मशवरे में शिरकत करना, महीने में मखाना जोड़ में शिरकत करना। मेरे दोस्त भाइयों, रोजाना हफ्ते वाली मखाना इन अमाल को आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा के सालाना 4 महीने की तरतीब 7 से 2 महीने दामले अल्लाह आज़ाद कर दें। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal yang bulanan juga hendaknya kita jaga. 10 hari setiap bulan. Kita setiap orang-orang lama keluar 10 hari setiap bulan. Setiap bulan meluangkan waktu 10 hari untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hari pertama keluar dengan jamaah mahalah, keluar 3 hari nisab. Kemudian keluar 3 hari untuk takaza, bahwa ada jamaah, tidak ada orang lamanya, maka kita temani mereka. Kemudian yang ketiga 3 hari lagi kita keluar masyurah. Bulan ini masyurah dengan ahliyah, bulan depannya keluar dengan ibu kandung dengan saudara perempuan, nanti bulan depannya lagi keluar 3 hari masyurah dengan neneknya,
atau bibinya yang sudah menikah. Nanti berikutnya lagi dengan hadiahnya lagi. Ya setiap bulan keluar masurah. Cuma setiap keluar masurahnya, yang masurahnya 3 bulan sekali, yang kitanya setiap bulan. Bawa istri, besok bawa ibu kandung, bawa neneknya, bawa bibinya. Kita bisa bawa mereka keluar jalan Allah SWT. Nah, sisa 1 hari, kan 10 hari, 3 hari nisab, 3 hari taqadzar, 3 hari masurah, masih 1 hari kita gunakan untuk menemani jamaah belajar mahasiswa, di mana mereka keluarnya setiap bulan 3 hari, sesuai dengan waktu cutinya. Cutinya 1 hari dalam 1 pekan, maka waktu cuti itulah mereka keluar. Di pekan kedua, pekan ketiga mereka akan keluar 3 hari, 1 hari per pekan. Nah, ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang digunakan untuk menemani jemaah saat ini keluar 1 hari. Nah, ini 10 hari setiap bulan. Kemudian kita hadir dalam juz bulanan halaqah, amal bulanan yaitu juz bulanan halaqah. Hendaknya kita datang ke sana. Kita bawa seluruh jemaah masjid kita hadir dalam juz bulanan halaqah. Nah, hadirin dirahmati Allah SWT, ini amal kita kerjakan dengan kedisiplinan, tepat waktu, menyempurnakan waktunya kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan majukan kita. Allah SWT akan sempurnakan iman kita. Allah SWT akan terima kita, dan Allah akan menjadikan kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu jawab सालाना अपनी जमात को बनाना चाह रहे हैं, यानी कि आप जमात बना के मुझे दो तो मैं ले जाऊं। अपनी जमात को बनाओ, खुद बनाओ, खुद जमात को ले जाओ। हर साल 2 घंटे ज़ाब्ते की तरतीब बनाओ। हिसाब नहीं मिलता, ये चारों को भी जुमला अच्छा नहीं लगता। सारे मुल्क अल्लाह के हैं, सारे मुल्कों का मालिक अल्लाह है, हिसाब अल्लाह देते हैं, दुनिया की हुकूमत नहीं देती। हमारा ताल्लुक अल्लाह से इतना मजबूत प्रवक्ता रहो, अल्लाह पाक हमें विदा मिल जाए। हर साल 2 घंटे ज़ाब्ते में लगाओ, कम से कम। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, इस धरती पे आ जाओगे और इस धरती में सबको लाना है। इस प्यार और मोहब्बत से लोगों को आगे बढ़ाओ, लोगों को निभाओ, लोगों को लेके चलो। हम लोगों को निभाएंगे, अल्लाह हमें निभाएंगे। हमारे दिल में हर एक के बारे में मोहब्बत हो, किसी से हसद नहीं, किसी से बुग़्ज़ नहीं, किसी से कपट नहीं, किसी से जलन नहीं। ये कैंसर से ज्यादा बड़ी बीमारियां हैं, इसका मारा सीधा जहन्नम में जाएगा। किताबों में आता है जो कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, शर कदर और शब्द उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। इन बीमारियों से बचते हुए और अपनी कौम को आगे बढ़ाते हुए, अपने साथियों को आगे बढ़ाते हुए, दिन में थकना, रात में रोना अगर करोगे, अल्लाह पाक आपको मकबूल बंदा बनाएंगे। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita kerjakan amal harian, mingguan, bulanan dengan sempurna, maka amal yang tahunan, 4 bulan setiap tahun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam membentuk jemaah 4 bulan setiap tahun, kita bentuk sendiri. Jangan gabung jemaah yang sudah jadi. Tapi setiap orang lama hendaknya usaha sepanjang tahun untuk membentuk jemaah 4 bulan sendiri. Nah, kemudian di samping 4 bulan setiap tahun, kita luangkan waktu 2 bulan untuk belajar tertib di Nizamudin. Setiap tahun keluar 6 bulan, 4 bulan kurus umum, kemudian yang 2 bulan untuk belajar tertib di Nizamudin. Kita kadang mengatakan nggak dapat visa, beberapa kali kita ngajuan visa ditolak. Seperti itu kurang nggak enak didengar. Kenapa ya Allah SWT, negara seluruh negara itu milik Allah. Berarti itu ta'aluk kita dengan Allah yang kurang. Maka kita tingkatkan ta'aluk dengan Allah SWT. Misalnya melalui puasa, bangun malam, doa, puasa, bangun malam, doa, supaya Allah SWT buka seluruh dunia untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan seperti belajar. Dan kemudian kita sendiri maju dalam usaha dakwah. Setiap tahun 4 bulan, bahkan 2 bulan tertib kita rutin, dan kita bawa serta teman-teman kita maju bersama dalam kerja dakwah. Bahkan kita majukan teman-teman kita untuk dalam pengorbanan.
Dan jangan sampai ada dalam hati kita perasaan iri, dengki, hasad, marah, dendam, bertengkar dengan sesama. Orang yang bertengkar, yang mau ada perasaan dendam dalam hatinya, maka ketika malam Lailatul Qadar pun dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam disusahkan pun dia tidak akan dapat ampunan Allah SWT. Orang yang bertengkar, orang yang mendiamkan saudara muslimnya, orang yang dalam hatinya ada perasaan hasad, iri dengki, Allah SWT tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Maka kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela itu. Dalam hati kita ada mahabbah, kasih sayang dengan sesama. Dengan kasih sayang dengan sesama, mahabbah yang sama itu, kita sendiri maju dalam dakwah dan kita majukan orang-orang lain dalam usaha dakwah. इखलास के साथ, इस्तिखलास के साथ, इखलास हर खैर के काम को अल्लाह ही के लिए करता है। इस्तिखलास अल्लाह का खौफ से करता है। ये दो सिफात के साथ अगर हम चलेंगे, अल्लाह का मुकर्रम बंदा, महबूब बंदा को बनाएगा। हमारे इबादत को, हमारे दावत को लेके चलना, जो हमारे इबादत और दावत को लेके चलता है, उसका दीन सबसे अफजल है। मेरे दोस्त भाइयों, इन औसाफ को लेकर नियत को इंशाअल्लाह हर साल 4 महीने और 2 महीने दावती के लिए हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे और इसकी नियत करते हैं इंशाअल्लाह। इसके लिए जो तैयार है वो खड़े होकर ध्यान करें। Maka dan kita bawa usaha ini dengan sifat ikhlas dan istiqlas. Ikhlas dalam niat, istiqlas dalam kerja. Ikhlas dalam niat semata-mata karena Allah. Istiqlas ya kerja dakwah inilah kesibukan kita, tidak ada yang lain. Dengan dua sifat ini kita maju dalam usaha dakwah. Kemudian kita gabungkan antara dakwah dan ibadah. Orang yang menggabungkan dakwah dan ibadah itulah orang yang paling bagus agamanya. Siapakah yang lebih indah agama daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan dia beramal soleh. Menggabungkan antara dakwah dan ibadah, menyempurnakan takaza dakwah dan ibadah, maka akan menjadi yang terbaik agamanya. Maka dengan cara seperti itu, bila kita setiap tahun 24 bulan sampai 2 bulan belajar tertib ini rutin, terus setiap tahun seperti itu, Allah SWT akan menjadikan kita hamba-hamba yang dekat dengannya. Maka yang bersedia silakan bangun berdiri. Alhamdulillah setiap tahun tambah 2 tertib. 4 महीने हर साल. Setiap tahun 4 bulan dan 2 bulan tertib silakan bangun berdiri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tashrif रखो. Jazakallah, jazakallah. Silakan duduk. तशरीफ रखो. Silakan duduk. माशाअल्लाह. इसके लिए एहतिमाम से दिन में थकना है, रात का Maka siang hari kita letihkan diri kita dan malam hari kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. हयातुल सावा में दुआ का लिखा है. Duduk Pak, duduk sekarang duduk. हयातुल सावा में दुआ का लिखा है कि रोम के बादशाह ने अपनी मौत से पूछा, जब मुसलमानों से मामला होता है, मुसलमान तादाद में कम, असला में कम, वो कामयाब हो जाते हैं, तुम तादाद में ज्यादा, असला ज्यादा नाकाम हो जाते हो. पुणे ने जवाब दिया, कामयाब नहीं हो सकते. उसने पूछा क्यों? बताइए, मुसलमान दिन के शहर सवार है, रात की इबादत गुजार है, जिसमें सवालियों की पीठ पे बैठकर अल्लाह की बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, रात के मुसल्ले की पीठ पे बैठकर रसूल की बात को लोगों तक पहुंचाते हैं. और रहमत यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को बयान में फरमाते थे, आज के मुसलमान भी तो दिन में थके रात में रोए, अल्लाह को हिदायत का जरिया बनाए. Maka dalam kitab Hayatul Syuhada, sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, mereka dalam setiap medan mereka selalu menang. Maka Raja Romawi bertanya kepada menteri-menterinya, kepada pasukannya, jenderal-jenderalnya, kenapa kalian selalu kalah? Padahal jumlah kalian lebih banyak, berlipat kali ganda, senjata kalian lebih lengkap daripada mereka, jumlah mereka lebih banyak, jumlah kalian lebih banyak. Namun kenapa mereka selalu menang dan kalian selalu kalah? Maka salah satu menterinya, penasihatnya yang tersepuh mengatakan, iya, kita tidak akan bisa menang melawan mereka karena mereka adalah orang yang lari, mereka adalah penunggang kuda. Urusan bina dan berubah nilai yang hari mereka penunggang kuda, malam hari mereka penunggang sajadah.
Yang hari mereka sibuk menyampaikan kepada manusia firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malam hari mereka sibuk menyampaikan hajat-hajat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mereka memiliki sifat itu, kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka. Ketika membayangkan kita ini orang itu bakal mengatakan, hari ini pun apabila orang Islam mereka setiap hari menunjukkan dirinya dalam menyampaikan agama kepada manusia, dan malam hari menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka pertolongan seperti yang Allah berikan kepada mereka. Hari ini Allah. Subhanallah. Silakan jemaah-jemaah yang akan berangkat ke negeri jauh, IPB